तेव्हाचं असं वाटायचं आम्हाला कुठून गावावरून आलोय, पण तेव्हाचं आणि आता म्हणजे काही बोलतात ना 35 वर्ष काय केलं तर आता तर सिंगापूर झालंय आपलं विरार. 1.5 वर्षाचं पहिली गोष्ट खरं सांगायचं म्हणजे 1.5 वर्षाचं तुम्ही मला विचाराल तर असं वाटतं बापरे, खड्डे बघून असं 2 वेळा तर मीच पडली आहे. કચ્છી સમાજ અમારું, ગુજરાતી સમાજ અમારું બધું સિટીને જ વોટ નો પ્રિપેર કરશે, કારણ કે ઈ જ જોઈએ છે અમને, હિતેન્દ્ર ઠાકુર જ જોઈએ અમને. लगाव करते मूर्ख है, क्यों लगाव करते हैं? उत्तर भारतीय को अप्पा ने जितना सपोर्ट किया है ना इतने सालों में, कभी कोई पार्टी ने पूछा है क्या? कभी नहीं पूछा है, अप्पा ने ही पूछा है। इतने साल 35 साल से मैं देख रही हूँ उत्तर भारतीय को विरार वसई में हर तरीका से सपोर्ट जो भी हो उत्तर भारतीय के लिए किया हूँ। बाकी जो कि उनको काम करने के उनके पास एक जुझारू बने कि नहीं हमको काम करना है। बाकी जो नगर सेवक हमारे जो खड़े हुए हैं, पंकज ठाकुर, हम लोग बचपन से देख रहे हैं इन लोग को, ये सब काम करने वाले लोग हैं। अभी जो नए नए आए हैं इन लोग को क्या, इन लोग को एडजस्ट होने में साल 1.5 साल 2 साल लग जाए। नमस्कार, मी अजय वर्मा आणि आपण सगळे पाहतात थिंकिंग ऑफ यूथ, विचार युवकांची। सध्या आपण प्रभाग क्रमांक 5 ग्राउंड रिपोर्टिंग साठी आपण आलेलो आहे। आपल्या बरोबर सध्या आपण एक सोसायटी मध्ये शिरलो। सोसायटी मध्ये इकडे सर्व नागरिक आहे जे इकडे राहतात गेले अनेको वर्षापासून। ह्यांच्या मनातला पक्ष कुठला, ह्यांच्या घरातला पक्ष कुठला, ह्यांना सांभाळणारा पक्ष कुठला, या सर्व गोष्टी यांच्याकडनं जाणणार आपण। या प्रकारे आता ह्या स्टेट म्हणजे एमबी स्टेट स्टेशन परिसर मध्ये प्रत्येक प्रांताचे लोक राहतात। गुजराती असो, मारवाडी असो, उत्तर भारतीय असो किंवा मराठी असो, या सर्व गोष्टीमध्ये इकडे प्रामुख्याने लक्ष असतं। ज्या प्रकारे आता महिला आहे जे घरात राहतात पण घर बघत असताना सुद्धा लोकांनाही बघत असतात। आपण ह्यांच्याकडे चर्चा करणार आहे, काय नेमकं यांचं म्हणणं आहे, काय ओपिनियन आहे 15 तारखेला, ते कोणाला नक्की मत करणार आहे। सध्या आपल्याकडे क्या आपका नाम क्या? माझं ज्योती मधली आहे। किती वर्षापासून राहतात? आम्हाला 40 वर्ष होऊन गेले, 42 झाले। म्हणजे आपण हे जवळून बघितलेलं वसई विरार। हो अगोदरची अवस्था काय होती स्टेशन? अगोदरची स्टेशनची म्हणजे काय, आम्ही जेव्हा 77 साली आलो तेव्हा स्टेशनला बस असायच्या आणि रिक्षा काहीच नसायची, घोडागाडी असायची आणि गटाराची लाईन पण नव्हती। 2 साईडला फक्त ओपन गटार होती, मधून रस्ता। आणि इथे तर रात्र झाली 8 वाजले की पुढे जायलाच भीती वाटायची, एवढं म्हणजे सगळं जंगल सारखंच होतं। म्हणजे तेव्हाच असं वाटायचं आम्हाला कुठून गावावरून आलोय, पण तेव्हाचं आणि आता म्हणजे काही बोलतात ना 35 वर्ष काय केलं तर आता तर सिंगापूर झालंय आपलं विरार। म्हणजे 35 वर्ष सर्व गोष्टी कोणी केल्या? आप्पाने केल्या। कुठल्या आप्पाने? आप्पा म्हणजे आमचे माननीय हितेंद्र ठाकूर ठाकूरने केला, यांनीच केलंय। म्हणजे सर्व तुम्ही विकास। आणि तेव्हा पाणी सुद्धा नव्हतं, रात्री 2 वाजता टँकर यायचे, आम्ही तिकडे झोपेतून अर्ध्या झोपेतून उठून 2 वाजता टँकरवर पाणी भरायला जायचो, परत सकाळी उठून ऑफिस जायचो। हो, भरपूर वेळोवेळी भरपूर। लोक म्हणतात की पाणी येत नाही, अजूनही पाणीचा प्रॉब्लेम आहे। भरपूर येतं पाणी। आणि तेव्हा तर ती फक्त उघडी टाकी होती तिकडे, कुठे ग ते ईस्टला पापडखिंडी काय ते आहे ना, तिथे एकदा तर एकदम हिरवं पाणी आलं। आम्हाला वाटलं काय शेवाळ आला असेल म्हणून आम्ही गरम करून प्यायलो आणि नंतर 4 दिवसांनी माहिती झालं की त्याच्यात म्हैस मरून पडली होती। म्हणजे त्याच्यापेक्षा पण आता आपण पाण्याचं एवढं केलंय ना आम्हाला की खूपच, म्हणजे आता विरार सोडून जावंसं वाटतच नाही आम्हाला। म्हणजे खूप हो, अगदी चांगली। म्हणजे तुम्ही आता म्हणालात ना मनातलं स्थान पण आमचं हितेंद्र ठाकूर आणि घरातलं स्थान सुद्धा हितेंद्र ठाकूर, आम्हाला सांभाळणारे सुद्धा हितेंद्र ठाकूर आणि आमचे देवताच आहेत समजणार ते। म्हणजे खूपच बरंच केलं आमच्यासाठी। आपलं काय म्हणणं? ज्या प्रकारे आपण किती वर्षापासून राहतो? मी जवळजवळ 25 वर्षापासून विरार मध्ये राहते। 25 वर्ष। आणि मी आल्यानंतर मला जेवढं दिसलंय विरार, तर रस्ते, गटार, बाकीचा सर्वांगीण विकास म्हणावं तर लाईट, पाणी, हे प्रॉपर एक म्हणतात ना, एक प्रॉपर आराखडा जो असतो शहराचा, तो प्रॉपर आराखडा आज आम्ही बघतोय। कोणी केला? माननीय हितेंद्र ठाकूर यांच्यामुळे नक्की प्रश्नच नाही या बाबतीत। आणि मुख्य म्हणजे आम्ही खूप सुरक्षित फील करतो इकडे विरार मध्ये राहण्यात। त्यांच्या राज्यात आम्हाला कधी कसलाही त्रास नाही, मान सन्मान सगळा मिळालाय आम्हाला। सर्वांगीण विकास म्हणायचा तर सोशल वर्क मध्ये अगदी हळदी कुंकवापासून ते सामूहिक विवाहापासून, त्यांनी शिक्षणापासून सगळ्या बाबतीत त्यांनी सगळ्यांचा हे केलंय। 1.5 वर्षात आता नवीन सत्ता आली भारतीय जनता पार्टी, त्यांनी काय केलंय? 1.5 वर्षाचं पहिली गोष्ट खरं सांगायचं म्हणजे 1.5 वर्षाचं तुम्ही मला विचाराल तर असं वाटतं बापरे, खड्डे बघून असं 2 वेळा तर मीच पडली आहे रस्त्यात आणि मानेचा माझा प्रॉब्लेम झालाय। म्हणजे सांगण्याचा हेतू हा की 1.5 वर्षात कोण काय करतं? ज्या माणसाने आयुष्यभर लावलंय आणि त्यांनी एकट्याने नाही, आता त्यांचे सुपुत्र आहेत, त्यांची पुरी फॅमिली आहे, सगळे आम्ही नागरिक
आम्ही फक्त आणि फक्त आपण एवढ्यासाठी मानतो की आमचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ती ते स्वतःची समजतात. आता ह्या परिसरात कुठला नगरसेवक उभा आहे तुमच्या जवळ, म्हणजे आता बहुजन विकास आघाडी असो किंवा बहुजन- भारतीय जनता पार्टी असो? बहुजन विकास आघाडीचे आमचे माननीय पंकज ठाकूर आहेत, रीटाबेन सरवई आहे, हार्दिक राऊत आहेत आणि अर्चना जैन आहे. हार्दिक राऊत अगोदरचे नगरसेवक होते, पंकज ठाकूर पण अगोदरचे नगर, रीटा सर्वे फक्त नवीन जैन मॅडमला चान्स दिलाय. अर्चना त्या लोकांनी काम केलं की जे अगोदरचे नगरसेवक होते? हो, ते ऍडव्होकेट आहेत. ऍक्च्युली पहिली गोष्ट म्हटलं ना, स्त्रियांना मान सन्मान, मुलींना, आणि आमचे काही प्रश्न असले म्हणजे आज पण आम्ही निघालो ना तर आम्हाला रस्त्यात हे बोललं गेलं की आम्हाला इकडे स्टेशन जवळ व्यवस्थित चालणं रस्ता, तर आमच्या माननीय पंकज ठाकूर साहेबांचं फक्त एवढंच म्हणणं होतं की आम्हाला करून द्यायला आम्हाला पुढे यायला लागेल त्यासाठी, आणि जोपर्यंत जनता त्यांना नाही देत तोपर्यंत ते कसे पुढे येणार. आज आपण एक वडिलांना ह्याच दृष्टीने बघतो की मुलं त्यांचा आधार बनतील, तर आम्ही त्याच जागी ह्यांना समजतो. आप कितने साल से रह रहे हो? मुझे 40 साल हो गया. कौन से जात कहाँ से हो? हम लोग गुजराती है. गुजराती છો? હું શું લાગે ગુજરાતી છે છું. અહીંયા ગુજરાતી છો તો ભારતીય જનતા પાર્ટીનો મોટા પ્રમાણે લગાવ હશે તમને? ના છે પણ છે. એ મુંબઈમાં એમને હું મોદીને માનું છું, પણ અમારા દેશમાં વિરાર માટે તો માનનીય હિતેન્દ્ર ઠાકુર, પંકજ દાદા એ અમારા માટે ભગવાન છે. ભગવાન છે? ભગવાન જ છે. તો બધા ગુજરાતી મારવાડી તો મોદીને પ્રેમ કરે છે. કોઈ નથી કરતું. કોઈ નથી કરતું. નહીં, બધા એમને જ માને છે, અને એને 35 વર્ષથી જે એમને સુખ આપ્યું છે ને એ તો બીજી કોઈ પાર્ટી આપી શકે એવું જ નથી. સાચો કહું છું કે સાચું ગુજરાતી જ બોલું અહીંયા છું. બરાબર છે? એકદમ બરોબર છે. અને બધા કચ્છી સમાજ અમારું, ગુજરાતી સમાજ અમારું બધું સિટીને જ વોટ નો પ્રિપેર કરશે, કારણ કે એ જ જોઈએ છે અમને. હિતેન્દ્ર ઠાકુર જ જોઈએ અમને. એ કે છે અમારા માટે ભગવાન છે. અમે ટ્રેનમાંથી ઉતરીને આવીએ છીએ ત્યારે અમને કોઈનો પણ ડર નહોતો. પેલા ડર હતો, પણ જ્યારથી એમને સંભાળ્યું છે ત્યારથી અમે ટ્રેનમાંથી ઉતરી રાતના પણ આવીએ એકલા તો અમને ડર નહીં. પણ 1.5 વર્ષ થઈ ગયો તમારી જ પાર્ટી ભારતીય જનતા પાર્ટી એટલે મોટી પાર્ટી કહે છે, ગુજરાતની મોદીજી છે, બધા મોટી પાર્ટી કહે છે, તમને એ લગાવ નથી એના માટે? 1.5 વર્ષ ના ના, અમને તો વિશ્વાસ નથી, પણ અમને દાદા ઉપર જ, અપ્પા ઉપર જ વિશ્વાસ છે. હિતેન્દ્ર માનનીય હિતેન્દ્ર ઠાકુર ઉપર જ, અને આમ પંકજ દાદા ઉપર. અને હમણાં જે ઊભા છે એમને પણ અમને વિશ્વાસ છે કે એ લોકો પણ અમારા માટે બધું સારું જ કરશે. સારું જ કરશે. आपका क्या ओपिनियन है? सॉरी, आपका क्या होगा? कहाँ से हो? मैं उत्तर भारतीय हूँ. उत्तर भारतीय, मतलब मराठी, गुजराती, अब उत्तर भारतीय, हाँ. सभी एक साथ? सभी एक साथ ये हैं. बिल्डिंग में सब एक साथ रहते हैं? हाँ, यहाँ पे भेदभाव कुछ कभी आप हितेन ठाकुर जी ने कभी किया ही नहीं. नहीं किया? उन्होंने हर तरह से सभी को मान सम्मान एक सरीका दिया. कोई भी हो, उत्तर भारतीय हो, चाहे मराठी हो, चाहे मुस्लिम हो. कितने साल से रहे हो? मैं यहाँ पे 35 साल से हूँ. 35 साल, मतलब मेरी सत्ता- शादी करके मैं बॉम्बे में रहती थी. शादी करके मैं विरार में आई हूँ, तब से मैं विरार का डेवलप देख रही हूँ. विरार में हम टोप से पानी भरते थे, पानी ऐसा आता था, रात दिन कभी आएगा हमको पता नहीं. लेकिन आज अप्पा की वजह से पानी का तो मतलब कभी प्रश्न ही नहीं आता है. पानी तो भरपूर है. पानी तो छोड़िए आप, गटर होने दो, रोड होने दो, चाहे अगर लेडीज रात को 2 बजे भी आना चाहे ना, बिंदास आ सकती. कोई किसी को हाथ में जरा भी कोई परेशानी नहीं है. कभी होता भी पहले बहुत था, लेकिन अभी तो इतना अच्छा सुविधा है ना कि रात को 2 बजे तक भी कहीं भी जा सकते हैं. आप तिरुपति नगर तक जाइए, आपको कोई परेशानी नहीं है. पर अभी भारतीय जनता पार्टी 1.5 साल में आई है, उन्होंने उत्तर भारतीय ज्यादा करके लगाव करते हैं नाला सोपारा वो जो लगाव करते हैं मूर्ख है. क्यों लगाव करते हैं? उत्तर भारतीय को अप्पा ने जितना सपोर्ट किया है ना इतने सालों में, कभी कोई पार्टी ने पूछा है क्या? कभी नहीं पूछा है. अप्पा ने ही पूछा है. इतने साल 35 साल से मैं देख रही हूँ उत्तर भारतीय को. विरार वसई में हर तरीका से सपोर्ट जो भी हो उत्तर भारतीय के लिए किया हूँ. मैं खुद देखते हैं 35 साल का. जो करते ना वो वापस फिर रिटर्न इस साल में आ जाएंगे. उनको पता है कि उन्होंने 1 साल में मूर्खता की है, लेकिन इस साल वो रिटर्न आएंगे, फिर अप्पा को ही वोट देंगे. बहुजन विकास आघाड़ी हमारी सिटी को ही वोट देंगे. आपका क्या ओपिनियन, कहाँ से हो? मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ. आप भी उत्तर प्रदेश यस से हो? यस. आप हमारे वसई तालुका में बता दीजिए एक भी केस हुआ है? पहले नहीं, मतलब अभी 1.5 साल में? 1.5 साल में भी कुछ नहीं हुआ है. कभी भी कुछ नहीं है. उत्तर भारतीयों को ऊपर यहाँ सबसे सुरक्षित उत्तर भारतीय है यहाँ पर. आप समझे कि मनसे का इतना प्रकोप था यहाँ पर, लेकिन कभी ऐसा नहीं कि उत्तर भारतीयों के ऊपर किसी ने हाथ छोड़ा हुआ. अभी की बात नहीं है, लेकिन कभी भी हम लोग को उत्तर भारतीयों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. और रहेगी बात हितेंद्र, ये जुझारू नेता बोले जाते हैं, उनको जुझारू नेता बोला जाता है. बाकी जो कि उनको काम करने का, उनके पास एक जुझारू बने कि नहीं हमको काम करना है. बाकी जो नगर सेवक हमारे जो खड़े हुए हैं, पंकज ठाकुर, हम लोग बचपन से देख रहे हैं इन लोगों को, ये सब काम करने वाले लोग हैं.
अभी जो नए नए आए हैं इन लोगों को क्या, इन लोगों को एडजस्ट होने में साल 1.5 साल 2 साल जो लग जाएगा। भारतीय जनता में अभी अपोजिट में खड़े हैं, वो भी आप ही की पार्टी से होते थे पहले, हाँ हाँ होते तो और अभी उधर जाके 35 साल का रोना करते हैं। उनको देखिए, कुछ लोग उन लोग की जो नाराजगी है ना वो खुद उनको जानते हैं और वो लोग जानते हो कि हम लोग किस लोग, वो फिर दोबारा आएंगे, मैं गारंटी बता रहा हूँ आपको। घर वापसी यस 100% आएंगे उन लोग, हार गए क्योंकि तो घर वापसी। 100% आएंगे। अभी जो उनके जो मन के अंदर जो लड्डू और जो उनका जो लालच फूट रहा है ना, वो उनको काम नहीं आएगा। कुर्सी का लालच। यस यस जी 100% उनको। मैं बोली वो नगर सेवक जो आए थे हमारे दरवाजे पे, मैं खुद बोली, उनका नाम था क्या नाम था उनका, दर्शना वो त्रिपाठी। नगर सेवक है, अभी नहीं, अभी इस बार उठी है वो नगर कैंडिडेट है। हाँ कैंडिडेट वो उठी है, जो भी है वो तो नगर सेवक एडवोकेट के भी, लिए। उनका जोश है कि हम वन हाँ मैंने उनको ये भी बोला कि आप भी तो इतने सालों से अप्पा के पास ही थे, आप देख रहे थे, फिर आप कैसा परिवर्तन मांग रहे हैं? परिवर्तन इतने सालों में इतना हुआ है, फिर भी आप बोल रहे परिवर्तन। मैं खुद उनसे बात की तो मुझे बोलते हैं आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं जो है मैं सच्चाई बोल रही हूँ, और वो सच्चाई आपको भी पता है, लेकिन आप लोग निगलेक्ट कर रहे हो। त्रिपाठी मैडम कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है। अब झूठी बोल रही होंगी ना, पता नहीं अब उनको क्या, पता नहीं वो क्या बीजेपी में जाके मिला और क्या, मैं तो नहीं कुर्सी जानती। मिली ना उनको, उम्मीदवारी मिली, मिली तो ठीक है ना, अभी मालूम पड़ेगा, वो हार जीत के बाद सब पता चल जाएगा, सब पता चल फिर पता ही चलने वाला। और लोग एक, आपका नाम? અશ્વિન સોલંકી સોલંકી, मतलब તમે ગુજરાતી? ગુજરાતી શું લાગે છે ગુજરાતમાં મોદીજી, ગુજરાત સ્ટેટ દેશમાં અલગ છે, મોદીજી, દેશમાં મોદી અલગ છે, મહારાષ્ટ્રમાં મોદી, મહારાષ્ટ્રમાં બી અલગ છે। વસઈ વિરાર શેઠ હિતેન્દ્ર ઠાકુર કેમ કેમ એવી શું કામ 35-40 સાલથી હું જોતો આવું છું, યંગ જૂથ છું, હતો ત્યારે હા. કાંઈ નહોતો, ત્યારથી હું એમને જોતો આવું છું અને એમનું કામ જોયું છે, એમની સાથે લગાવ જોયેલો છે લોકોનો। અને લોકોનો લગાવ છતાંય જે અત્યારે જે માણસો ગયા છે અહીંયાથી ત્યાં મશીનમાં ધોવા માટે ગયા છે, બરાબર? अच्छा मशीन में धुआ, हाँ, वो मशीन गंदे थे और धुलने के लिए वहां गए। મશીનમાં ધોવા ગયેલા છે। અને જે વિપક્ષ પક્ષમાં જે બેઠેલા માણસો છે એની ઉંમર 35 વર્ષ હોય કે ન હોય નથી ખબર, પણ 35 વર્ષનો હિસાબ માંગે છે। एक बार हिंदी में बोलो ना। हाँ, जो 35 साल का बंदा होगा कि नहीं, 35-40 का होगा, लेकिन वो 35 साल का हिसाब मांग रहा है। 20 साल उसने क्या है? 20 साल उसने इधर लगाया है। हाँ, उसको खुद को पता है कि यहाँ कहाँ विकास हुआ है, किसने किया है, क्या किया है। वो बंदे खुद हमारे से विकास करके लेके गए हैं और वो परिवर्तन मांग रहे हैं उधर जाने के जाने के बाद। उसको खुद को पता है सब चीज। क्या लगता है, वन साइड आप लोग आओगे? वन साइड, सब गुजराती, मारवाड़ी, हिंदी, उत्तर, सब वन साइड, वन साइड, वन साइड, एक भी मत नहीं। एक भी नहीं। सारे लोगों ने मन बना लिया है, सारे लोगों ने मन बना लिया है कि हम लोग जो पुराना जो हम लोग जो कर चुके हैं उसको तो दोहराएंगे नहीं। हम लोग सिटी बजाएंगे, सारे लोग सिटी में, सारे लोग सिटी बजाएगी सभी लोग। बघितला, लोकांच्या मनात फक्त हितेंद्र ठाकूर आणि त्यांचा पक्ष बहुजन विकास आघाडी सिटी। आता बघण्यासारखं असेल, बहुजन विकास आघाडीने गेले 35 वर्षापासून खरं काम केलं आहे का? कारण खरं काम केलं असलं असतं म्हणून हे लोक त्यांच्या तोंडाने बोलताय का बहुजन विकास आघाडीने किती प्रगतीचा मार्ग ओपन केला। ज्या प्रकारे आता 35 वर्षाचे वयाने झालेले ते भारतीय जनता पार्टीमध्ये समावेश झालेले आणि ते 35 वर्षाचा विकास काम मागताय, या सर्व गोष्टीवरती लक्ष असणार आहे। ज्या प्रकारे 15 तारखेला या सर्व नागरिक बंधू भगिनी घरातनं बाहेर पडणार आणि बटन जे आपला आवडता पक्ष असेल त्याच्यावरती बटन दाबून त्यांना विजयी करणार, तेही सुद्धा बघण्यासारखं असेल। प्रत्येक गोष्टीची अपडेट आमच्या चॅनल मार्फत आम्ही नक्कीच तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न करू। धन्यवाद।